Hello students, welcome to our LSD classes. Today we will be reading the first poem, a photograph written by Shirley Toulson from the 11th class English book Hornbill. So before we get into the text, let us know something about the poet and the theme which she deals in this poem. Shirley Toulson was born on May 20, 1924 and lived up to 2018. She was a poet, teacher, educational journalist and editor, and author of books like East Anglia, Walking the Ley Lines and Ancient Tracks, The Drovers and Celtic Journeys, etc. This poem, A Photograph, is a tribute to her mother. The framed pictures or the still pictures that we collect in an album has a lot of sweet and sad memories of our past. When we see these pictures and recollect the past memories, sometimes we are thrilled, sometimes we feel sad and lonely, and at other times tears also roll down and we go into a silence. With these same emotions, Shirley Toulson has written this poetry, A Photograph, in which she recollects the days which she spent with her mother and the pain which she feels at the loss of her mother. So now let us go through the text and have the line by line explanation of the poem Photograph written by Shirley Toulson. So in the first stanza, the poetess says, "The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went peddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so." So in these lines, the poetess Shirley Toulson, she is holding the picture or the framed photograph of her mother, in which she is there with her two cousins, the two girl cousins, and she recollects that how her mother used to say that once they went for a sea holiday with her two cousins and how they spent the day, how they enjoyed the day, and the recollections of those moments were there in the photograph which the poetess is at present holding in her hand. Then in the photograph, the mother is there standing in between, and the two cousins of hers are holding her hands from each side, and here the big girl, which is the poetess's mother. And at that time, when they went for the sea holiday, the poetess's mother was just 12 years old. So in the picture, Shirley can see her mother standing in between, and she remembers that how they went for the sea holiday where the two cousins of her mother went peddling. Here peddling means they went for a boat ride. They say they went for a boat ride, and these two girls were sitting side by side holding the hands of the poetess mother, and the poetess mother was peddling the boat. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. So in this picture, the picture is of the poetess mother, and she's saying all three stood still to smile through their hair. So when the picture was being taken by the uncle of these girls who had accompanied them to the holiday, to the sea holiday,
There these three girls are standing with their smile on their face, and they're smiling at the camera which the uncle is holding and is ready to take a picture of these three girls. And here the poetess remembers that her mother had a very sweet face, my mother's, that was before I was born. So that means here the picture of the poetess mother is of those days when the poetess was not born. That means the poetess mother was not married. She was still a young girl, and the sea, which appears to have changed less than the picture of the sea, which is the background of the picture. Here the poetess is telling that the sea has not changed. There is a very less change in the picture. And which sea? That washed their terribly transient feet. Here transient means a very short period of time. So we remember that whenever we go for a sea, whenever we go to the sea, or we stand on the sands of the sea, we get our foot imprints on the sand. But as soon as the waves come, these footprints are washed away. So here the poetess is remembering that the mother and her cousins who stood on the beach of the sea, and the foot imprints which were created on the sands, they were washed away immediately as soon as the waves came. Some 20-30 years later, now here the time goes to those years when the poetess mother is married and the poetess is born. So both mother and daughter are sitting, and it is some 20-30 years later. Means here later means when the picture was taken. The time the picture was taken or the photograph was taken by the uncle, 20 to 30 years after that, she would laugh at the snapshot. His snapshot is the picture. So whenever the poetess mother saw this picture or saw this photograph, she had a laugh on her face. Why she had a laugh? Because she would recollect all those moments when she was 12 years old and she had gone for a sea holiday with her uncle and two cousins whose names were Betty and Dolly. She had spent a very great moment with her cousin and her uncle, and she recollects all those moments of enjoyment when she looks at the snap which was taken 20 to 30 years back when the mother was just 12 years old. So whenever she looked into this snap, she had a laugh or a smile on his face by recollecting those enjoyment or those moments of enjoy which she had enjoyed with her cousins. She said, "And look how they dressed us for the beach." Then she used to look at the dress which she had worn. So maybe some changes had been there. Now the dress sense which was there in the present day after 20-30 years, and the dress which she had worn at the time when she had gone for the sea holiday. So she looks even at the dresses. She looks each and everything that is in the picture, the face expression, the background of the picture, the sea, the dress, and everything. She looks very minutely and she recollects all the moments. Then she says, "The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both wry with the labored ease of loss." So now here, the poetess, when she is looking at this picture, and while she writes this poetry, at that time her mother is no more. She is already dead. So now here two things are there, two types of recollections or rememberings are there. One is the poetess mother laughter when she used to have on her face when she looked at this photograph of hers with her cousins Betty and Dolly. And the other thing is that the poetess remembers the laughter of her mother's face. So here she is telling that the sea holiday was her past. Here her refers to the poetess mother. So the poetess mother
would have a smile on her face when she saw the photograph, and the poet would have a smile on her face when she saw a smile on her mother's face. Now, as the poetess mother is no more, she is dead, so both Rai, here Rai means the change of the expression on a face when we are sad or disappointed at a loss of something. So now here when the poetess is looking at this photograph, at that time her mother is no more, she is dead. So when she looks at the photo and recollects the moments of her mother's laughter, disappointment, a feeling of sadness comes into her heart that is displayed on her face. So she makes her write. The same way, when the mother used to see the picture and recollect the moments of the sea holiday which she had spent with Betty and Dolly, a smile used to come on her face, and that smile would make the poetess happy. So now at the loss of the moment, means the loss of the moment of the sea holiday, which brought disappointment on the poetess mother's face, and now the loss of the mother, which brings a disappointment in the face of the poet, both can be seen. So both rhyme with the labored ease of loss. The loss of the moments of enjoyment at the sea holiday and the loss of the moment of the laughter on the mother's face. These two losses make both the poetess and her mother wry, or it makes them feel disappointed and unhappy. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. So the concluding lines of the poems here, what Shirley is trying to tell us, that she's been dead nearly as many years as that girl lived. That means the photograph which was taken at the sea holiday when the poet's mother was just 12 years, and now here as many years at that girl as that girl lived, means now already 12 years have passed that the poet's mother is dead, and of this circumstance there is nothing to say at all. So after 12 years, that means for continuously 12 years, whenever the poetess sees the picture of her mother with her cousins Betty and Dolly, a feeling of disappointment comes to her face because she has lost her mother. So now she is telling that this circumstances, there is nothing to say at all. So after 12 years, she is saying that I have experienced the pain and sorrow of the loss of my mother, and now at present I don't have anything to say about this or about my mother, and that is why its silence silences. Its silence means here the death of the mother brings a silence or brings a loneliness in the life of the poetess, and that loneliness makes the poetess to become silent. So she says, at present, I don't have anything to say about those circumstances, and that is why a silence seals my life. So that is the end of the explanation of the poem. Hope you understood it nicely. इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के बाद थोड़ा हिंदी में भी हम समझ लें कि इस पोएम फोटोग्राफ जिसको शर्ली टोल्सन ने लिखा है, इस कविता में वो क्या कहना चाह रही है। ये कविता जो है वो यादों का कविता है। तो शर्ली टोल्सन के हाथ में एक कार्डबोर्ड है, वो कार्डबोर्ड यानी एक फ्रेम्ड फोटो है, फ्रेम वाला फोटो है, जिसमें उसकी माँ है और साथ में उसकी दो कजिन्स हैं, दो चचेरी बहनें हैं जिनका नाम है बेटी और डॉली। तो ये तीनों जब पोएटेस की माँ 12 साल की थी
तब वो अपने ये दोनों कजिन्स के साथ और अपने अंकल के साथ एक सी हॉलीडे पर, यानी समुद्र पर एक हॉलीडे, एक छुट्टी मनाने के लिए गई हुई होती है। और इस दिन वो बहुत ही अच्छे तरीके से बिताती है, बहुत मज़े करते हैं ये लोग तीनों मिल करके। और उसी दिन का एक पिक्चर है इनके पास। तो इस पिक्चर में जो शर्ली टोल्सन की माँ है वो अपने दोनों कजिन्स के साथ में है, और वो उस दिन को याद करती है कि किस प्रकार से ये दोनों लड़कियां, द टू गर्ल कजिन्स वेंट पेडलिंग, कि किस प्रकार से वो एक छोटे से पैडल वाला नाव को चलाते हुए समुद्र में सैर करते हैं, और किस प्रकार से ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, कैसे दोनों बहनें जो है एक एक तरफ से मेरी माँ के हाथ पकड़े हुए थे, एंड शी द बिग गर्ल, और उन दोनों कजिन्स में से ये पोएटिस की जो माँ है वो बड़ी थी, सम 12 ईयर्स और सो, करीब 12 साल की थी। और ये तीनों लड़कियां साथ में खड़ी हुई हैं, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। और एट द अंकल विद द कैमरा, जो अंकल साथ में गए थे उनके हाथ में कैमरा है, और कैमरा से ये तीनों लड़कियों का फोटो खींच रहे हैं। और इस फोटो को देख करके शर्ली टोल्सन कहती है, अ स्वीट फेस माई मदर्स, देखती है कि मेरी माँ का चेहरा उस समय बहुत ही सुंदर था। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, और वो कब का फोटो था, जब ये पोएटिस शर्ली पैदा नहीं हुई थी और उसकी माँ सिर्फ 12 साल की थी। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, फिर वो देखती है कि फोटो के पीछे का जो बैकग्राउंड वाला हिस्सा है उसमें उस समुद्र का फोटो है, जिसमें वो बोलती है इसमें कोई भी आज भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। और कौन सा समुद्र, जो वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, जो उनकी माँ और उनकी दोनों कजिन्स के पैर को धो रहे थे। अब यहाँ ट्रांसिएंट फीट यानी जब हम समुद्र में जाते हैं और रेत में खड़े होते हैं तब रेत में हमारे पैरों के निशान पड़ जाते हैं, और जैसे ही समुद्र की लहरें आती है निशान मिट जाते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे ये बहुत जल्दी से समुद्र के लहरों से जो रेत पर बने हुए पैरों के निशान मिट जाते हैं, वैसे ही ऐसा लग रहा है कि ये जो तस्वीर है पोएटिस की माँ और उसकी बहनों की, इसकी जो यादें हैं वो भी धीरे धीरे अब खत्म होती जा रही हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर, यानी उस हॉलीडे के करीब 20-30 साल बाद, जब पोएटिस की माँ अपने उन क्षणों को याद करती है, वो सी हॉलीडे के बारे में जब याद करती है, तब उस स्नैपशॉट को देखकर, उस फोटो को देखकर उनके चेहरे पर एक लाफ, एक मुस्कुराहट, एक स्माइल हुआ करता था। और वो टोल्सन को दिखाते हुए बोलती थी, सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। तो वो दिखाते हुए बोलती है कि देखो ये बेटी है, डॉली है, और ये लोग कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे दिख रही है, सारा कुछ का वर्णन करते हुए उस फोटोग्राफ को वो अपने बेटी को दिखाते हुए अपने बहनों के बारे में बात किया करती थी। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, तो ये जो सी हॉलीडे है जो टोल्सन की माँ 12 साल की थी तब खिंचाई थी, तो ये सी हॉलीडे जो है वो उसके लिए एक भूतकाल की बात हो गई, एक पास्ट की बात हो गई है। और माइन इज हर लाफ्टर, और आज के दिन जब उसकी माँ नहीं है, शर्ली टोल्सन की माँ की मृत्यु हो गई है, और जब वो ये कविता लिखती है तब उसकी माँ उस समय जीवित नहीं होती है। तो टोल्सन जो है वो अपनी माँ को याद करते हुए, उस फोटो को वो देखते हुए याद करती है कि ये जो सी हॉलीडे है वो मेरी माँ के लिए जिस प्रकार से एक पास्ट की बात, यानी बीती हुई बात हो गई थी, उसी प्रकार से उनके चेहरे पर वो फोटो को देखकर जो मुस्कुराहट आती थी वो मेरे लिए पास्ट यानी बीती हुई बात हो गई है। बोथ राई विद द लेबर डीज ऑफ लॉस, और दोनों के चेहरे पे एक शिकन आ जाती थी, एक दुख भरा एक्सप्रेशन आ जाता था जब ये फोटो को देखते थे। जब टोल्सन की माँ का विवाह हो चुका था और वो पल जो उसने सी हॉलीडे में बेटी और डॉली के साथ बिताए थे, उन पलों को याद करती हुए जब वो फोटो को देखती थी तो उसके चेहरे पर एक दुख भरा या दुख भरा एक एक्सप्रेशन होता था कि ये पल जो है बहुत ही सुखद थे पर ये बीत गए हैं, अब ये हमारा बीता हुआ पल हो गया है। उसी प्रकार से
जो चेहरे पे उसकी खुशी हुआ करती थी उन पलों को याद करके, वो खुशी वाला एक्सप्रेशन जो है टोल्सन के लिए भी एक बीता हुआ पल हो चुका है। तो वो बोलती है कि ये लॉस जो है, ये जो मुझे क्षति हुई है, ये जो मुझे नुकसान हुआ है मेरी माँ को खोकर, तो मेरे चेहरे पर ये राय यानी एक दुख भरा एक्सप्रेशन ले आता है। Now she's been dead nearly as many years as that girl lived. अब शर्ली टोल्सन यहाँ याद करती है कि मेरी माँ को मरे भी, उनकी मृत्यु हुए भी उतने ही साल हो गए जितने साल में वो इस तस्वीर को खिंचाई हुई थी। कहने का मतलब है जब शर्ली टोल्सन की माँ 12 साल की थी तब वो बेटी और डॉली के साथ ये तस्वीर खिंचाई थी, और अब उनको मरे हुए 12 साल हो गए। तो 12 साल तक के शर्ली टोल्सन भी इस तस्वीर को देख देख करके अपनी माँ को और उनकी खुशियों को याद करते रहती है। और इस कविता के लास्ट या कंक्लूडिंग लाइंस में वो ये बोलती है, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। अब इस समय में, इस 12 साल के बीत जाने पर मेरे पास इस स्थिति या परिस्थिति के बारे में बोलने के लिए कुछ भी शब्द नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, यानी इसकी जो चुप्पी है वो मेरे लिए भी चुप्पी बन जाती है। कहने का मतलब है कि माँ के मृत्यु के बाद शर्ली टोल्सन के जीवन में एक चुप्पी, एक एकांतपन आ गया था, और वो एकांतपन का जीवन उसने 12 साल बिताते बिताते अब ऐसा हो गया कि वो भी एक चुप्पी सी साध ली है, और अब अपने माँ के बारे में या उस फोटोग्राफ के बारे में अब वो कुछ भी कहना नहीं चाहती है। तो इन्हीं लाइंस के साथ ये पोयम यहीं समाप्त होता है, और हम देखते हैं कि हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ है। हम भी बहुत सारे ऐसे पिक्चर जो हम अपने सुखद पलों को संजोते हुए अपने एल्बम में रखे हुए रहते हैं, या हमारे घर में फ्रेम किए हुए जो पिक्चर्स हैं, जब हम उनको देखते हैं तो हम भी उन पलों को, जब हम उस पिक्चर को या फोटोग्राफ को खिंचाए होते हैं, उन पलों को हम याद कर लेते हैं। और कभी कभी यादें जो है वो सुखद होती है, कभी कभी बिछड़ जाने के कारण वो यादें हमें दुख भी देती है, और हमारा चेहरे का एक्सप्रेशन भी चेंज होते रहता है। कभी चेहरे पे हंसी या खुशी झलकता है, कभी दुख झलकता है, और कभी हम उन पलों को याद करके हमारे आँख से आंसू भी आ जाते हैं। तो ये जो स्टिल पिक्चर्स है, ये जो फोटोग्राफ्स है, वो हमारे जीवन का जुड़ा हुआ एक धरोहर है जो हमारा खुशी और दुख दोनों को व्यक्त करता हुआ है। यही इस पोयम का थीम है जिसको शर्ली टोल्सन ने इसमें बताने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आ गया। धन्यवाद सुनने के लिए।